ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्माकम् अद्यतनविषयः अस्ति, अद्यतनाभ्यासः अस्ति 18, परन्तु प्रथमः वयं पश्यामः पुनः द्वे सन्धिसूत्रे स्तोः श्नुनाष्टुः अपि च श्नुनाष्टुः। यतः पूर्वद्वे सूत्रे द्वे कक्षायां समयं न आसीत्। सन्धिसूत्रं दृश्यं सन्धिसूत्रं दर्शनस्य समयं न आसीत्। यतः वयम् अधुना पश्यामः। एकनिमिषः। Ketuji, your AirDrop is on. Is your AirDrop on? You can share that. प्रथमः अभ्यास 15 अभ्यास 16 अभ्यासे पृष्ठक्रमाङ्कः 32। 16 अभ्यासे वयम् अपश्यामः स्तोः श्नुनाष्टुः। स्तोः श्नुनाष्टुः इति सूत्रः। कोऽपि पठति वा? सुन्दरजी कृपया पठतु। स्तोः श्नुनाष्टुः किं भवति? इस या तवर्ग के पहले या बाद में इश या चवर्ग कोई भी हो तो इस और तवर्ग को क्रमशः इश और चवर्ग हो जाता है। जैसे रामस और च रामश्च, कस और चित कश्चित, सत और चित सच्चित, शांगिन और जय शांगिन्य जय, याच और ना याचन्या। सूचना स्मरण रखें कि रामः बालः कहा आदि पुल्लिंग एक वचन में इसके स्थान पर ही विसर्ग रहता है। अतः संधि में कार्यों में इस रखा जाता है। आगे भी इसको विसर्ग ही संधि नियमों में समझो। बहु धन्यवादः। बहु सुन्दरम् अस्ति। इसको विसर्ग इस् इति विसर्गः अस्ति। यदि इस् अस्ति प्रथमशब्दे यदि अन्ते इस् अस्ति, इस् सन्धिकार्यं पुनः इस् इश् अस्ति। इस् नास्ति, इश् अस्ति। अपि च यदि प्रथमशब्दे कोऽपि तवर्ग अक्षरः अस्ति, सन्धिकार्यं पुनः चवर्ग भवति। So is becomes sh, ish, and tavarga becomes chavarga. जैसे यहाँ पे दिए हैं और we have already seen रामश्च रामश्च,
कस् प्लस चित्, कस् योगः चित्, कश्चित्, सत् योगः चित्, सच्चित्. तो इस श रामस् च संधिकार्यं पुनः रामश्च, कस् कश्, सत् चित् सच्चित् इतिवत्. अपि च सप्तादश अभ्यासे वयम् अपश्यामः ष्टुनाष्टुः सूत्रः, नियमसप्ततिः ष्टुनाष्टुः सूत्रः अस्ति. अवन्तिकाजी कृपया पठतु. ष्टुनाष्टुः किं भवति? ष्टुनाष्टुः त या त वर्ग के बाद में या पहले य श या ट वर्ग कोई भी हो तो स का स और त वर्ग को क्रमशः श और ट वर्ग हो जाता है. जैसे रामस धन षष्ठ, रामश षष्ठ, रामश षष्ठ, तत् धन टीका, तट्टीका, इश धनतम, इष्टम, राश धनत्रम, राष्ट्रम. बहु धन्यवादः. यदि इस् अक्षरमस्ति, सन्धिकार्यं पुनः इस् इष् मूर्धन्यषकारं भवति, मूर्धन्यषकारः भवति. अपि च यदि तवर्गः अस्ति, टवर्गः भवति. जैसे रामस् षष्ठः, रामषष्ठः, रामषष्ठः नास्ति, रामषष्ठः. तत् टीका, तत् टीका, इष्टम् इष्टं, राष्ट्रं राष्ट्रम्. इदं द्वे सूत्रे वयम् अपि श्रीमद्भगवद्गीतासु प्रथमः पश्यामः कुत्र अस्ति. अत्र नवम. Can you have the number for Shtunashtuhu? Shtunashtuhu is the one after Stohoshtra, 8441. Shtunashtuhu. अपि च Stohoshtunashtuhu 8440. Yeah, 8440. That I have. तो स्तोहोश्चुनाष्टुः अपि च ष्टुनाष्टुः. इदं नवमश्लोके कुत्र भवति? स्तोहोश्चुनाष्टुः कुत्र भवति? ष्टुनाष्टुः कुत्र भवति? कोऽपि वदति वा? Akash ji, can you please repeat your question? हाँ, this Stohoshtunashtuhu sandhi and Shtuna. So when we do these sandhis, this is one practice that we have been doing, that we will see in Brihadaranyaka, we will see after this, both in Gita and in Brihadaranyaka, where this sandhi is coming. So for example, this in Bhagavad Gita, we have selected these 9 shlokas starting from 255 to 1866, 9 shlokas. At least in one of these shlokas, this Stohoshtunashtuhu and Shtunashtuhu are coming. So for example, Stohoshtunashtuhu says, Is becomes Ish. And Shtunashtuhu says, Is becomes Ish. So we search in these shlokas, we search where either Murdhanya Shakara or Dantya Shakara, where these come. So that there is some practical meaning also to Sandhi, instead of just saying theoretically, Is becomes Ish and Is becomes Ish, we can actually see where it is coming. Is it okay? हाँ, कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? Yes. Is this a question, as in, or we can answer? Yes. Answer it. Yes, please answer. Where it comes. Okay. That is where. So, one I can quickly locate is Dvabhimau Purushau Loke. Sharat Shakshara Evacha. Exactly. So that is where. You have it, Petrulji? एकनिमिषः, सुमञ्जय जी, एकनिमिषः. I will just share with. Is your airdrop on? Yes. कृपया वदतु सुमञ्जय जी, कृपया वदतु. उत्तमम्. पंचदश अध्यायस्य 16तम श्लोके
इमा संधिः दृश्यते क्षरक्षाक्षर तथा स्थित द्वितीय अध्यायस्य 55तमे श्लोके इमा संधिः दृश्यते स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते स्थितप्रज्ञः तत् उच्यते बहु सम्यक् प्रथमः बहु सम्यक् अस्ति शरश्चाक्षर एव च दिस् इस् स्तोः शुनाश्चुः बहु सम्यक् अस्ति परन्तु स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते स्तोः शुनाशु नास्ति किमर्थं यतः श दन्त्यषकारः नास्ति अत्र स्थितप्रज्ञस् सकारः अस्ति स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दन्त्यषकार किमपि कुत्रापि नास्ति द्वितीयाध्याय 55 श्लोके तद् सूत्रम् अस्ति तस्मिन् विसर्जनीयस्य सः वयं पुनः पश्यामः परन्तु प्रथमः भवान् अवदत् शरश्चाक्षर एव च बहु सम्यक् अस्ति शरश्चाक्षर इति स्तोः शुनाश्चुः अस्तु ष्टुनाष्टुः कुत्र भवति ष्टुनाष्टुः 5.8 last word ending question स्वपन श्वसन ending स्वपन श्वसन स्वपन श्वसन स्तोः शुनाशु नास्ति यतः स्वपन अपि च श्वसन द्वे भिन्नशब्दे स्तः स्वपन श्वसन अच्छा but you are saying na becomes nya that has to be correct right that is wonderful बहु सम्यक् अस्ति स्वपन अपि च स्वपन श्वसन बहु सम्यक् अस्ति हाँ करेक्ट स्तोः शुनाश्चुः बहु सम्यक् अस्तु अपि च ष्टुनाष्टुः अत्र अस्ति द्रष्टुं 11वें अध्याये 11 अध्याये शक्ये एवं विदो द्रष्टुं किन्तु यतः इष्टं शब्दः अपि अभ्यासे अस्ति इष्टं समानः अस्ति द्रष्टुं तुमुन् प्रत्ययम् आश्रयित्वा तुमुन् प्रत्यय मुख्य अस्ति अत्र मुख्य अस्ति तुमुन् प्रत्यय परन्तु ष्टोः ष्टुनाष्टुः अपि च अस्ति किमर्थम् इष्टमपि कस्मिन् प्रत्यये अस्ति इष्टमपि एकः प्रत्ययः अस्ति अस्तु अहं पश्यामि प्रत्यय नो झलां जशोन्ते will be only for like Jagadishwara वैसे will be झलां जशोन्ते ishtam but he wants it will be given in the end of the book it is given. You know this, if you take the drashtum word, so the word, when we look at that ishtam, to think is, you would never think dras is some kind of word. So do you take drashtum as a word or do you take there is the shtunashtuhu sandhi here? This shtunashtuhu, is very difficult to find. It is not a common sandhi. It is like that other one that we saw, that Haraye, Gurave, that one that we saw, Enga Padantayati, right? Or Echoyavaya. That one. See, these things are not, these sandhis are not easy to find.
So they will give very basic shabdas as drishtantas, like ishtam. It is not necessary for us to say ishtam is is plus tam, but this is the sandhi karya. So they will give such shabdas. Others like stohoshnashtu is quite obvious. When you say sharashakshara, it is so obvious. But these will not be so. Whether drashtum is a word by itself or is it like it actually a sandhi? Drashtum is a word with tumunanta. Drashtum, tumun pratyay. It is a tumun pratyay shabda, drashtum. But it is also, so it has become a word on its own. So the pratyay is the mukhya karya there. But it is also, like, this is given, if you want, in page number 222 of this Rachananuvada Kaumudi, ishtaha is given. Ishtaha is kta pratyaya, they have given. So ishtam also, napumsakalinga, will be ta pratyaya, like that. So ishtam is actually kta pratyaya, like ishtaha. Mukhya is ta pratyaya, like pratyaya. But they have given that example in shtunashtuhu also. Because it is not easy to find. Thank you. So stoho shtunashtuhu api cha shtunashtuhu. Ha. Next one is Sharashakshara. Ha. Sharashakshara is stoho shtunashtuhu. Samya. Sharascha akshara. Ksharaha cha akshara. Ksharaha cha became ksharascha. So that is stoho shtunashtuhu. Bahu samya. Correct. Astu. Aduna vayam बृहदारण्यकोपनिषदि पृष्ठक्रमाङ्कः 513 बृहदारण्यकोपनिषदि वयं पश्यामः स्तोहोष्णाष्टुः किं कुत्र भवति अपि च ष्टुनाष्टुः Page number 513 यच्चोक्तम् इत्यस्मिन् शब्दे वयं इमां सन्धिं पश्यामः. यच्च उक्तं बहु सम्यक् यच्चोक्तं स्तोहोष्णाष्टुः सन्धि अस्ति. अस्तु स्तोहोष्णाष्टुः कुत्रापि अस्ति वा अपि च ष्टुनाष्टुः कुत्र अस्ति? Sorry, where was this word when someone just shared? Bhashya first line, second paragraph, first line. Yeah. अपि च Is that Shitoshna also with that? Correct. That also. That and Shitoshna. Yes. So that also. Api cha stohoshnastu asti kyun tat shita. Tat shita. Astu. Api cha one hint. Shtunashtuhu shabda. Krishna shabda is shtunashtuhu. Okay. Krishna. That is also shtunashtuhu. Actually. Kris plus na. So Krishna iti shabda itivat kutra asti. Shita Ushna. Can we take that also? Yes, somewhere. Shita Ushna has to be Shtunashtuhu. You have to search hard for these kinds of sandhis. द्वितीयां पङ्क्त्याम् अपि वयं ष्टुनाष्टुः सन्धिं पश्यामः. कुत्र? नेष्टार्थप्राप्तौ सम्यक्. इष्ट. So yes. बहु सम्यक्. नेष्टार्थप्राप्तौ. परन्तु कुत्र अस्ति? अच्छा, यहाँ पे. Second para, second line. हाँ, नेष्टार्थप्राप्तौ. बहु सम्यक् अस्ति. न इष्टार्थप्राप्तौ. इष्ट शब्द ष्टुनाष्टुः अस्ति. अस्तु. Any other? कोऽपि अन्य? टीका मध्येपि अन्तिमे वाक्ये विदितपद तदर्थ संगतेः वाक्यार्थ न्यायविदः तदर्थे. So विदः तदर्थे. This is visarga. Sorry. This is visarga. Yes. Apuha visarga. हाँ. तस्मिन् इष्टार्थ. हाँ, सम्यक्. तस्मिन् इति इष्टार्थः. सेकंड पैरा. हाँ, बहु सम्यक् अस्ति. तस्मिन् इति इष्टार्थः. करेक्ट. बहु सम्यक्. तापि इति अत्रापि च
ष्टुनाष्टुः सन्धिः अस्ति. बहु सम्यक्. अस्तु, अधुना वयं पश्यामः अभ्यासः 18 अभ्यासः. अस्तु, सन्ध्याजी कृपया पठतु. क शब्दानि किं भवति भवन्ति? पात्रं, स्थान, बर्तन, भाजनं, भजनं, स्थान, बर्तन, पादम, स्थान, स्थानं, स्थान, पदम, स्थान, प्रमाणम, प्रमाण, एकादशः, एक स्थान, एकता, एकत्व. हाँ, एक निमिष. एकदेशः, एकदेशः, एकस्थान और एकता, एकत्व. सम्यक्, धन्यवादः. पात्रं, भाजनम्, आस्पदं, स्थानं, पदं, सर्वाणि शब्दानि सर्वाणाम् अर्थानाम् अर्थः अस्ति स्थान. परन्तु काण्टेक्स्ट् विल् म्याटर् हियर्. काण्टेक्स्ट् भिन्नः अस्ति, स्थानं भिन्नः अस्ति. पात्रम् इस् लैक् अ पाट्, जैसे बर्तन यहाँ पे भी है. भाजनम अपि स्थान अपि च बर्तन. आस्पदम जैसे इदम आस्पदीभूत, हम सिद्धांत बिंदु में देख रहे थे, इदम आस्पदीभूत. इन वन शब्द, इफ यू वांट टू से इन अ टेक्स्ट फॉर एग्जांपल और इन अ फिलॉसफिकल आइडिया, आस्पदम इति स्थानम अस्ति. स्थानम लोकेशन, एनी फिजिकल लोकेशन स्थानम. पदम इज जनरली इन सम काइंड ऑफ सेंटेंस इन टेक्स्ट. इदम पदम अस्ति अपि च स्थानम, स्थान के अर्थ में. दिस आल्सो गिवन इन मीमांसा. समटाइम्स दे मे यूज दिस स्थान. इन मीमांसा देयर इज वन विधि लाइक श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान. दैट स्थान इज दिस padam. So in texts they may use this word padam. So sthana, everything is place or location, but context matters. Astu. Pramanam, pramana. Ekadesha, ekasthana. Ekadeshe api या अपि च एकदेशी अस्ति. वेदान्तग्रन्थे वेदान्तग्रन्थेषु एकदेशी अस्ति. न्यायग्रन्थेषु अपि एकदेशी अस्ति. एक अर्थवान एकदेशी, एक स्थान. Only in one place he will take. Part of the philosophy accepts, part he rejects. वैसे एकदेशी. एकता, एकत्व, oneness. अस्तु, धन्यवादः. सुमंजय जी कृपया पठतु अग्रे. ख. स्पर्धा करना, शंका करना, चेष्टा करना, कल्प होना, परा जोड़ आए, पलाय, भागना, द्युत चमकना, वेग कांपना, त्रप लज्जित होना. धन्यवादः. स्पर्धा करना, टू कम्पीट. शंका करना, तो एकदेशी का काम भी आएगा. एकदेशी समटाइम्स शंका, टू डाउट, शंका करना. चेष्टा करना. चेष्ट इति शब्द कस्मिन् सूत्रे अस्ति? We just saw the sandhi, ये वही है ना? वही है. ष्टुनाष्टु. सम्यक. चेष्टा करना, टू पुट एफर्ट. अस्तु. कृप कल्प, होना, टू बी, टू बिकम. वैसे परा जोड़ाई, परा योग है पलाय, भागना, टू रन अवे, एस्केप इतिवत. द्यूतना, चमकना, टू शाइन. वेप कांपना. वी हैड सीन, वयम् अपश्यामः एक अन्य शब्द कांपना अर्थस्य एक अन्य शब्द वयम् अपश्यामः षोडशाभ्यासे वयम् अपश्यामः कंप धातु, कांपना. कंप धातु अपि कांपना अस्ति, टू ट्रेम्बल और टू शेक. वेप धातु अपि कांपना अस्ति. श्रीमद्भगवद्गीतासु प्रथमाध्याये अर्जुनो उवाच वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते. आई एम ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल, वेप, कांपन. अभी च त्रप धातु लज्जित होना, टू बी शाई और टू हैव सम शाइनेस, लज्जित होना. हाँ, अस्तु. आभाजी कृपया पठतु. घ शब्दानि किं भवति? घ.
एकाकिन यानी अकेला, ह्रस्व ग, एकदा, एक बार, एकाकिन यहाँ से ग, नॉट घ, नॉट घ, ग, एकदा एक बार, सदा यानी सर्वदा, एकतः एक ओर से, मतलब फ्रॉम वन साइड, एकधा एक प्रकार से, एकमात्रम यानी एकमात्र, एकवारम अभी से एकवारे, एकवारम एकवारे, ओके, एकवारम और एकवारे बोथ मीन एक बार या एक बार में। धन्यवाद। द वे आई अंडरस्टैंड दिस इज एकवारम इज एक बार, हाँ, एंड एकवारे एकवारे वुड बी एक बार में। हाँ, परंतु किमर्थम एकवारे एक बार में, वैसे क्यों है? दिस इज वन ऑफ द विभक्ति। हाँ, कस्मिन् विभक्ति अस्ति? एक बार में, अधिकरण। अधिकरण, ओके, वेयर इट इज इन ऑन दैट पर्टिकुलर, कस्मिन् संधि अस्ति? I have to refer to the notes, I don't remember. May will be Saptami Vibhakti. सम्यक, मे is सप्तमी विभक्ति. मे is always सप्तमी. अधिकरण सप्तमी. अधिकरण is always used in अधिकरण सप्तमी idea. In, on, at सप्तमी. एक बार में, एक बारे सप्तमी अस्ति. एक बारे, एक वारम, एक बार अथवा एक बार में. एकदा, सदा, एकतः, एकधा, एकमात्रम. You can always say for different numbers also. Dvi, tri, chatur, everything. All these things will come. Tridha, chaturdha, chaturdha nice. Chaturvidha bhajante ma वैसे. So ekadha, dvidha, tridha, everything is similar. They have given iti atra दृष्टान्तः अस्ति एकशब्दस्य. एकम् इति संख्याशब्दस्य दृष्टान्तः अस्ति. अस्तु. अग्रे घ, दीर्घ घ. केतुल जी कृपया पठतु. दीर्घ घ किं भवति? एकाकिन, हाँ, अकेला, हाँ, एकांत, एकांत, एकविध, हाँ, एक प्रकार का. हाँ. एकाकिन, अकेला, अलोन. जैसे भगवद्गीतासु कुत्र भवति? षष्ठाध्याये एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह. while doing ध्यान be alone. षष्ठाध्याये अस्ति. अहं चिन्तयामि. एकाकिन शब्द अकेला अर्थ में है. अकेला, अलोन. एकांतः, एकांत, टू बी अलोन, टू फील लाइक एकांत होना. एक विधा, एक प्रकार का, वन वे. एक विधा. एकधा इज एक प्रकार से, एक विधा एक प्रकार का. अस्तु. सूचना, पात्र, प्रमाण सर्वे नित्ये एकवचन अस्ति. नपुंसकलिंग. तो पात्रं, भाजनम्, आस्पदं, स्थानं, पदं, प्रमाणं सर्वे नपुंसकलिंग शब्दानि सन्ति. स्पर्ध, त्रप सर्वे सेवतेवत्. सेवतेवत् आत्मनेपदीय धातु. सेवते, सेवेते, सेवन्ते इति वत्. व्याकरण, एक शब्द, एक वचनांत शब्द, लिट, जष्ट संधि. एक शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो. देखो शब्द संख्या 149. पृष्ठ क्रमांक किं भवति? 135. 135. सुंदर जी भवानेव पठतु कृपया. एकं शब्द. एकः, एकम्, एका. पुल्लिंगः, नपुंसकलिंगः and स्त्रीलिंगः. एकम्, एकम्, एकाम्, एकेन, एकेन, एकया. एकस्मै, एकस्मै, एकस्यै.
एकस्मात् एकस्मात् एकस्याः एकस्य एकस्य एकस्याः एकस्मिन् एकस्मिन् एकस्याम्। धन्यवादः, बहुत सुंदरम अस्ति। सूचना केवल एक वचन में रूप चलते हैं। ऑब्वियसली एक शब्द अस्ति तो द्विवचन बहुवचन नास्ति, नास्तः। एक शब्द एकवचन अस्ति, एक शब्दः एकः एकम् एका इति वत्। अस्तु, पृष्ठक्रमाङ्कः 32 नै कस्मिन् पृष्ठक्रमाङ्कः अस्ति? षट्त्रिंशत् 36। षट्त्रिंशत्। अस्तु, एक शब्द का संख्या अर्थ में केवल एक वचन में ही रूप चलेगा, अन्य अर्थ में बहुवचन में भी। अस्तु, सेव लिट् लकार आत्मनेपद। अवंतिका जी कृपया पठतु। सेव धातु सेविष्यते लुड् लकार आत्मनेपदे सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यसे सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यद्वे सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। बहु सम्यक्, धन्यवादः। सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यद्वे सेविष्ये सेविष्यावहे। एकनिमिषः, किम् अस्ति? वन सेकेंड। सेविष्यते सेविष्यावहे सेविष्यामहे। क्षम्यताम्, क्षम्यतां मतलब सॉरी। सेविष्यसे सेविष्यते सेविष्यद्वे सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। अस्तु, संक्षिप्त रूप लगाकर स्पर्धादि के लिट् में रूप बनाओ। केतुल जी कृपया हो तो स्पर्धते, स्पर्ध धातु किं भवति संक्षिप्त रूप लगाकर? हाँ, स्पर्धिष्यते, स्पर्धिष्येते, स्पर्धिष्यन्ते, हाँ, स्पर्धिष्यसे, स्पर्धिष्येथे, स्पर्धिष्यद्वे, स्पर्धिष्ये, स्पर्धिष्यावहे, स्पर्धिष्यामहे। बहु सम्यक्, धन्यवाद। Can everyone hear Ketul ji speaking? This round, yes. Okay. I could hear. Okay, no worries. Abha ji, did you hear? Yes, I could hear. Acha, is there anybody who couldn't hear? Okay, nobody, everyone heard. Astu. Abha ji, bhavati vadatu kalp dhatu किं भवति? कल्प धातु कल्पष्यते, कल्पिष्यते। हाँ, कल्पिष्यते, कल्पिष्येते, कल्पिष्यन्ते, हाँ, कल्पिष्यसे, कल्पिष्येथे, कल्पिष्यद्वे, कल्पिष्ये, कल्पिष्यावहे, कल्पिष्यामहे। बहु सम्यक् अस्ति। सुमञ्जय जी कृपया वदतु वर्धिष्यते इति। वर्धिष्यते, वर्धिष्येते, वर्धिष्यन्ते, वर्धिष्यसे, वर्धिष्येथे, वर्धिष्यद्वे, वर्धिष्ये, वर्धिष्यावहे, वर्धिष्यामहे। बहु सम्यक्। संध्या जी कृपया वदतु मोदिष्यते। मोदिष्यते, मोदिष्येते, मोदिष्यन्ते, मोदिष्यसे, मोदिष्यद्वे, शद्वेते, शद्येते, हाँ, मोदिष्यद्वे, हाँ, मोदिष्ये, मोदिष्याय वहे, मोदिष्यावहे, हाँ। मोदिष्यामहे। धन्यवाद। मध्यम पुरुष भवती वदतु। एक मोदिष्यसे, मोदिष्येते,
मोदिष्यद्वे। हाँ, धन्यवादः। मोदिष्यसे, मोदिष्येथे, मोदिष्यध्वे, मोदिष्ये, मोदिष्यावहे, मोदिष्यामहे। सम्यक् अस्ति। आवन्तिकाजी कृपया वदतु सहिष्यते इति। सहिष्यते, हाँ, सहिष्यते, हाँ, सहिष्यन्ते, हाँ, सहिष्यते, सहिष्येथे, सहिष्यद्वे, हाँ। सहिष्ये, सहिष्यावहे, सहिष्यामहे। धन्यवादः। बहु सम्यक् अस्ति। सम् आफ् दीस् वर्ड्स् आर् डिफिकल्ट् बिकास् स, इश्, ध, थ, एव्रिथिङ्ग् इस् कमिङ्ग् इन् वन् शब्द। बहु सम्यक् अस्ति। सुन्दर्जी कृपया वदतु भाषिष्यते। Quick question, हाँ, Harshi, हाँ, if I can ask. हाँ, वदतु। सहिष्यते, हाँ. is it सहन करना? यस्। अस्तु, सुन्दर्जी कृपया वदतु भाषिष्यते। सुन्दर्जी अस्ति वा? किं भवति? Sorry. हाँ, because muted. So भाषिष्यते, हाँ. भाषिष्येते, भाषिष्यन्ते, हाँ, भाषिष्यसे, भाषिष्येते, भाषिष्यद्वे, भाषिष्ये, भाषिष्यावहे, भाषिष्यामहे. बहु सम्यक् अस्ति. In this way, when we say it once at least, the samskara forms. लृट् लकार अस्ति भविष्यकाल, फ्यूचर. तो लृट् लकारे सेविष्यते, भाषिष्यते, याचिष्यते सर्वे अस्ति. सूचना सूचना केतुलजी कृपया पठतु. सूचना किं भवति? तो हाँ, इन धातुओं में लृट् में ईष्यते हाँ. आदि लगेगा. हाँ, सेविष्यते, वर्षिष्यते, वर्धिष्यते, सही? वर्धिष्यते. वर्धिष्यते, हाँ, मोदिष्यते, सहिष्यते, याचिष्यते, वर्तिष्यते, ईक्षिष्यते, वन्दिष्यते, भाषिष्यते, हाँ, कूर्दिष्यते, हाँ. यतिष्यते, शिक्षिष्यते, कंपिष्यते, वीक्षिष्यते, शोभिष्यते, स्पर्धिष्यते, शङ्किष्यते, चेष्टिष्यते, कल्पिष्यते, पलायिष्यते, द्योतिष्यते, वेपिष्यते, त्रपिष्यते, शयिष्यते, रुचिष्यते. बहु सम्यक्. बहु धन्यवादः. सर्वे धातुओं में ष्य मूर्धन्य शकारः भवति. सेविष्यते. परन्तु सुमञ्जय जी कृपया पठतु. ख किं भवति? इनमें सियते आदि लगेगा और धातु लाइक सुधीर सिंह लप्स्यते, रम्स्यते, त्रास्यते, अध्येष्यते. हाँ, अध्येष्यते is obviously supposed to be here, but this हाँ लप्स्यते, रम्स्यते, स्त्रास्यते सर्वे स्य अस्ति. लप्स्यामहे, लप्स्यामहे कुत्र भवति? लप्स्यामहे कठोपनिषदि बृहदारण्यक लप्स्यामहे. हाँ, कुत्रापि अस्ति लप्स्यामहे. कठोपनिषदि भवति अस्ति वा? लप्स्यामहे अस्ति. विद्राक्ष्मचेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयस्येव. लप्स्यामहे. It comes in some Upanishad for sure. I will check. Hasyate would also come in this category. हाँ, हास्यते, but they have not given it specifically, but yes, it has to be here. हास्यते, हास्येते, हास्यन्ते इति अस्ति. सम्यक्, बहु सम्यक् अस्ति. अस्तु, नियम there are two ways to say 81. एकाशीतिः is one. This one more. अस्तु, नियम एकाशीतिः. एकाशीतिः कः पठति? आभाजी कृपया पठतु. किं भवति?
How do we read the number? Ekashitihi, 81. All the numbers are given on page number 139 and 140 for any reference. Astu, कृपया पठतु. नियमः एकाशीतिः. पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन और प्रमाण शब्द जब विधेय के रूप में प्रयुक्त होंगे तो इनमें नपुंसक लिंग एक ही रहेगा. उद्देश्य रूप में होंगे तो अन्य वचन भी होंगे. जैसे गुणाः पूजा स्थानम सन्ति. यूयं मम कृपा पात्रं स्थ भवन्तः प्रमाणं सन्ति. अत्र सप्त प्रमाणी सन्ति. पात्राणि सन्ति. अत्र सप्त पात्राणि सन्ति. अस्तु. पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन और प्रमाण ये सर्वे प्रयुक्त होंगे. इनमें नपुंसकलिंग एकवचन ही रहेगा. नपुंसकलिंग एकवचन. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नित्य एकवचन. You see in the beginning सूचना itself they had given. हाँ, कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अत्र विधेय इति अभिधया किं निर्दिश्यते? सर्वे शब्द जब विधेय के रूप में है, like those two things are there. उद्देश्य विधेय, वो विधेय, when they are given as दिस क्रिया, जैसे दे आर गिवन लाइक उद्देश्य रूप में होंगे तो अन्य वचन होगा. विधेय के रूप में प्रयुक्त होंगे तो नित्य एक वचन है. सो यू सी गुणाः पूजा स्थानम. सो व्हेन देयर इज समथिंग लाइक दिस विधि देन पूजा स्थानम एक वचन ही रहेगा. परंतु उद्देश्य रूप में अगर है तो अत्र सप्त पात्राणि सन्ति. इट इज नॉट विधेय. I remember in one lecture the word Uddeshya. This comes in that Tarka also, right? Yeah, Nama. That is Uddeshya, right? Uddeshya. Is it Uddeshya? Vastu matra sankirtanam. Uddeshya Videya. That is Uddeshya. But here, like Uddeshya Videya, I am just going to check in the copy that I have. ये देखिए एग्जाम्पल है. बच्चा सो गया. इन दिस वाक्य बच्चा इज उद्देश्य और सो गया इज विधेय. वी हैव टू टेक दिस. बच्चा सो गया विल बी बच्चा उद्देश्य, सो गया विधेय. सो यहाँ पे पूजा स्थानम इज विधेय बट गुणाः इज उद्देश्य. दैट्स व्हाई दे हैव सेड अत्र सप्त पात्राणि सन्ति. इट विल नॉट बी अत्र सप्त पात्रम सन्ति, सप्त पात्राणि, बिकॉज इट इज उद्देश्य. बट इन पूजा स्थानम इट इज विधेय. So it is only nitya ekavachana. Okay. Sorry, just I know that I don't want to belabor this, but I'm not following both these sentences at all. The example sentences. Yes. Puja sthanam is one place. When we say gunaha, yes. Puja sthanam, what does gunaha mean? Karaka. Yes. Here the gunaha puja sthanam santi. So all this gunaha are santi. This nitya bahuvachana is for gunaha. Yeah, no, I understand, but the word gunaha it's not an object, right? Gunaha here. Right. The gunaha puja sthanam santi. I mean, I understand gunaha and santi. Why that is bahuvachan and santi is bahuvachan. I quite get that, but I'm not able to make sense of this sentence or the next one. Yum madhyama purusha bahuvachan. Correct. So you all mama kripa patram. Stha. Yum stha. I mean. Yeah, but what does it mean by you all? Mama Kripa Patram mean my, through me. Mama is Tritiya. Isn't it? Yes. Mama so is not Tritiya. Mama is Shashti. Mama is Shashti. Okay, sorry. Mama yes, Kripa Mama Patram. So you and Mama Kripa Patram. So I mean, I'm just trying to. How do I translate the sentence? Mama Kripa Patram, you yam stha. You all are my Kripa Patram. So here that patram is not like a bartan or a vessel. No, that is why I see in the beginning this patram, here they can mean sthana or bartan. They all mean sthana, but they may not be like a physical sthana. Like for this aspadam, you remember, right, in Siddhanta Bindu, idam aspadi bhuta. Where is the physical there? There is no physicality there, but it is still sthana.
So it necessarily does not be, but I understand your point. I think there are better examples. I will search for a better example for this and tell tomorrow. And mama and everything put together, I just struggling with this. Yes, I will search for something better than this. These are not obvious examples. कोऽपि अन्य प्रश्नः अस्ति वा? Akash J here, Patram is like candidate. You are a candidate of my Kripa. Yes. So स्थान को कैसे हम पिक करेंगे यहाँ पर? We don't need to say candidate. You have my Kripa. वैसे like पात्रम में चीजें हैं जैसे वैसे ही in you there is my Kripa. You can take like that. Kripa Patram is like there is one more, right? Like this, there is another often used example. You can say, I place my trust in you. Like some similar to that. I place my trust in you. Correct. I place my love in you or with you. Like that. There is one song, there is one Bhakti Bhajan song where this Kripa Patram jaise something else comes, like Daya Patram or something. There is a famous song. I cannot remember it. Can you say like you're showing some sort of award के पात्र है. हाँ वैसे है exactly. But instead of nominee you can say in you my Kripa is there. Like how we say in that patram there is Anna. Okay. So like that in that way. But sthana does not necessarily need to be a physical entity, and Kripa is not a physical thing. So you deserve this. Exactly. You are deserving of this. So you are the patra. There is one more, right? There is a famous usage with patra that is not coming to mind. Ekaha asti. If anybody remembers, you can tell. But I will still search. Aham pashyami uttaratara patutara drishtantaha kopi santi. I will check and I will tell tomorrow. Ankurji, you're quite busy. Don't bother so much about it. No, it's okay. I will check. The principle is clear, but it's just the sentence is odd. No, but this Uddeshya Videya, this whole niyama, I think needs a little clarification. I will still check and I will explain further tomorrow. There are better examples. Kopi anya prashna asti va? Is this like subject and predicate? I was trying to make sense of it that way. Generally when we say Uddeshya Videya, the general example that we give, at least in Hindi, is Bachcha so gaya. So Bachcha so gaya, yahan pe Bachcha will be Uddeshya and so gaya will be Videya. So you can say like that, but in Sanskrit there must be better examples. This is the Hindi example. Maybe there is a better one in Sanskrit. Lapsyate Shabda. In Brihat, where is Brihat Katha Shloka Samgraha? This is something else. No, Lapsyate comes in as an Upanishad mantra itself. Lapsyamahe or something will come. I will check that also. So both I am doing. It's Lapsya and Niyama Eka Shiti. Both. Lapsyate I have found. Yes. I have found. But that is not an Upanishad mantra. That is from Brihat Katha Shloka Sangraha or some other book they have given that. But in Brihadaranyaka or Katha Upanishad itself this comes. Lapsya Shabda will come. I'm not sure. I can't remember where it is. But I will see it. Both. Astu. Niyama Dvashitihi. 82. Niyama Dvayashitihi Kim Bhavati Sankhya Vidarteda Abhaji you already read a lot. Somebody else. Sandhyaji Kripaya Patatu Dvashitihi. Sandhyaji asti va? Yes. So ready to start? यहाँ से द्वयशीतिः नियम 82 नियम ओके सभी संख्यावाचक शब्दों से एक प्रकार से ये है इम्पोर्टेंट संख्याया विद्याते धा सभी संख्यावाचक शब्दों से प्रकार से अर्थ में धा लगता है. प्रकार का अर्थ में विद, गुना अर्थ में गुण तथा बार
अर्थ में वारम लगता है, जैसे एकदा, द्वदा, त्रिदा, बहुधा, एकविधा, द्विधा, द्विविधा, 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 हाँ, बहु सम्यक् अस्ति। एकविधः, द्विविधः। संख्याया विदार्थे धा, the sutra number is 5342. This number, this sutra comes so many times in all the texts that we are reading, because in Tarka Sangraha, in Brihadaranyaka Upanishad, in all of this Vidharte Da, Sankhya Vidharte Da Shabda will come, because many times they will say Ekadha, Dvividha, Tridha, Chaturdha, Chaturvidha, Bahudha, Sarve. Sarve Shabdartha is Atra Sutra Karya Asti. Sutra Karya Asti. Sankhya Vidharte Dha. This laps. It's 1127 Kathopanishad. Correct. I was just saying, Navittena tarpaniyo manushyo lapsyamahe Kathopanishad. Lapsyamahe vittamadrakshna chetva. Lapsyamahe shabda. Thank you, Sundarji. Dhanyavadaha. 1127 is lapsyamahe. Astu. संख्या विदार्थे धा. Now back to 82. सभी संख्यावाचक शब्दों से प्रकार से अर्थ में धा लगता है. So एकधा, द्विविधा, द्विधा, त्रिधा, बहुविधा, etc. चतुर्विधा, जैसे श्रीमद् भगवद गीता सु सप्तम अध्याये चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन. चतुर्विधा, that also is संख्याया विदार्थेगा. अस्तु. We'll see this Sandhi Sutra also and then end. Niyama त्रयशीतिः सुंदर जी कृपया पठतु किं भवति Sandhi? हाँ. Okay. So Jalan Jashonte. Now this Jalan Jashonte itself is Eng Padanta Tati. Samyak. Yes, Jashonte itself is that. Itself is that. Then Jalo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ushma. Ushma, Sha, Sa, Saha, Shaha. Yes. Ushma. को जश अपने वर्ग के तृतीय अक्षर होते हैं. जल यदि पद के अंत में हो, पद अर्थात सुबंत और तिङन्त. जगत और ईशः जगदीशः पट प्रदर्शनम पट दर्शन षट दर्शन षट दर्शन षट दर्शन. तो पदार्थात subanta or tinganta. I'll quickly say what the subanta tinganta is, but later we will see at the end of the book. So, how we say sup pratyaya and ting pratyaya. Jaise Rama shabda, Ramaha is sup pratyaya and Bhavati is ting pratyaya. So now our topic is pratyaya. So if anybody has a question with subanta tinganta, it will come later in this book. So we don't need to go much further in this. Regarding pratyaya, we can understand a little bit, because pratyaya we have already seen in the earlier book. Most important in this is Jagat Ishaha becomes Jagadishaha, and the akshara is coming. The akshara, tritiya akshara asti. Ta da. So in the Jagadishaha comes Shat Darshanam will become Shad Darshanam. Da is tritiya. Ta da. So everywhere that tritiya akshara will come into play. Examples will be given in this page. Kopi prashna asya? What does the word jhalo mean? Jhal. Jhal. What is jhal? Tomorrow we can see in Maheshwara Sutrani. Jhal will be given. Jhal will be there. Yes. Sorry. We can see that. Otherwise, we will see tomorrow, because now if we go into Ashtadhyayi, it will take time. But tomorrow when we see this Sandhi again, we can see, especially with the Laghu Siddhanta Kaumudi, Vritti, etc. for Jalan Jashonte, and there it becomes clear what this Jhal is. Today we just see the examples. Satchid, Satchidanandaha, Satchid. So Sat plus Chit we have already seen. Satchid kim asti sutra? Sat plus Chit is this one. Samyas. Stohoshunashtuhu. Samyas. Stohoshunashtuhu Satchid. Atra asti Sat
चिद आनंद. इट इज ओनली चित. त तकार अस्ति परंतु आनंद अस्ति स्वर बाद में. तो स्वर बाद में हो तो त बिकम्स द, सच्चिद आनंद. सेम वे फॉर सदानंद. जैसे सदानंद सरस्वती, सत आनंद has become सदानंद. जगत ईशः जगदीशः. दिक् अंतः, दिक् अंतः, end of दिक् will become दिगंतः. And तदकम, तत् अकम. I guess this is akam, I cannot read. अच्छा एकम अस्ति. तदेकम, हाँ हाँ हाँ, तद एकम, तदेकम will be तत् एकम will become तदेकम. And दिग्गजः, दिग्गजः, दिग्गजः अस्ति. तदा क प्रथम अक्षर अस्ति, सन्धिकार्यं पुनः तृतीय अक्षरः भवति. तृतीय अक्षरं भवति इति जलां जशोन्ति. अस्तु. Tomorrow we will see this sandhi in further detail in Ashtadhyayi along with vritti also. Then it will become clearer. अस्तु. कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? I will see this Niyam 81, some other examples, and we will see this tomorrow also. Astu. The shlok that was shared in the chat, Najayate Mriyata, that was in reference to, what was it in reference to? No, actually I was about to press other one for Lapsyate and it got incorrectly pressed. Oh, okay, I thought I did not understand the context. Okay, no. Thank you. Okay. I didn't see this until now. Lapsyame, that is 1127. Lapsyame. Now, interestingly, that word, it seems to be then Mundaka also and Taittiriya also, by the way. Lapsyame. Oh, where is that? Mundaka? Which mantra? I have to look for it. But Kato was more familiar. Mundaka, Lapsyamahe Shabda comes. Lapsyamahe, really? Mundaka, I'm not sure. I can't think of something in Mundaka. And I'm quickly searching. I don't find something in Mundaka. I couldn't think of it. But Kata is there for sure. Okay. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shantihi Shantihi Shantihi. Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayinam Sutrabhashyakratau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagini Vyomavadvyaptadehaya Dakshinamurtaye Namah. Om Shantihi Shantihi Shantihi. Om.